Hey everyone, good evening. Can you guys quickly confirm if you can hear me? ऑडियो और वीडियो पे एक बार चेक कर लो गाइस. गुड इवनिंग. Alright. Hi Vanshi, good evening. Hello Ritik. How are you guys doing? Okay, this is our fourth lecture on time, speed, distance. Today we are going to discuss a very interesting concept called trains. Hello Aditya, hi Gauri, good evening everybody. My name is Amit Surana. I have over 6 years of experience teaching quantitative aptitude and other concepts of our other areas of CAT. If you are on Instagram, please don't forget to follow #CAT Live Daily. While you're at it, get yourselves added to these two groups on Telegram. This will keep you updated with everything that we have planned for your MBA prep. And these are our toppers from CAT 2020. If you also want to see yourselves here, if you want to be the next person on this poster, all you have to do is pick up one of the value offerings that we have at Unacademy. You can get yourselves added to or enroll to one of these batches here. This one started on the 8th of Feb. This will be starting tomorrow, and this will be starting on the Saturday, 13th of Feb. 10th of Feb, this one. In the 10th of Feb one, we'll be dealing with concepts like time and work and time, speed, distance. So if you are someone who's not very comfortable with time and work, pipes and systems, and time, speed, distance, be it relative speed, effective speed, trains, boats, streams, elevators, escalators, races, all of that would be covered on the 10th Feb wala batch. This is going to be a 10 classes, a 10 class batch, and the one starting on the 13th is a weekend batch, Saturdays and Sundays, where I'll be taking number systems. So if you want to be a part of this, all you have to do is take the subscription. You can take the plus subscription by picking up any one of these packages. You can take the 12-month or the 24-month one. These are the most preferred ones. Use my referral code Surana Live to get your discount of 10%. You can also take the iconic subscription, where you will have personal mentors helping you every step of the way. Use my referral code Surana Live here as well to get your discount of 10%. Yeah, okay, that being said, shall we begin? Hi Nalin, hello Tanishk, hi Siddharth, hello Trippy. I'm doing good, thank you so much. Hi Rohit, hello Suchi, hey Samiksha, hi Akshay, hello Anshuman. Chalo, karenge start, shall we? So we are starting with what? Today we're talking about problems on trains. Yes, everything that you need to know about trains is what we'll be discussing. For you to understand this concept, what you need to know is relative speed. Yes, if you know relative speed, then a very big part of trains can be solved with that. So what does relative speed mean? If there are two moving objects not connected to each other, and if they're moving in the opposite direction, that means their speeds get added. If they're moving in the same direction, this means their speeds get subtracted. Yeah, so karenge start. Right, with trains, let's first talk about different scenarios that get asked here. Hi Siddharth, thank you so much. Hi Arithra, I'm doing great buddy, thank you so much. Nalin, we couldn't do it. I'll give you the update on that real soon. ठीक है? उमा सर कुछ शो नहीं कर रहा, सब ब्लैंक है, क्योंकि अभी बताएंगे, अभी बात करेंगे तभी तो शो करेगा.
So there are different scenarios in trains. There'll be one scenario where you would be asked to find out the time or whatever. A scenario where you have to, the train must reach a particular point. Okay, so let's take a scenario. Let's say there's a train here. Okay, and it has to reach, it has to cover a distance of 200 meters. Yes, it has to cover a distance of 200 meters where there is a let's say a station is here, a station starts here, right, and the train is 100 meters long. So if the first scenario is to reach a point, the reach point P, tell me what is the overall distance that the train should cover? Anyone? How much should be the overall distance that the train should cover to reach the station P, reach a point P? What should be the distance it should cover? Quick guys. Hi Yogita, hello Milan. Adit says 300, Gauri says 200, Ritik says 100, Danish says 300. How about others? So look at this. Read the language is extremely important here. To reach a point basically means that the engine of the train must be aligned with the point. Yes, that means the train must be here. Are you getting it? When the train is here, this position, it means the train has reached a point. Its engine must be aligned with the point. Are you getting it? So the actual distance covered will only be 200 meters. Yes, if a train has to reach a point, then it's only the distance that it has to cover. On the other hand, if we have a scenario where they're asking about a train crossing a point, yes, a train crossing a point, that means let's say there's a train 100 meters long, there's a station in 200 meters, now there's a station P. Okay, now if I'm talking about crossing a point P, then how much will be the distance that it has to cover? For the train to cross the point, cross kab hota hai? When the complete train has gone through the point. Yes, that means the train must be here. समझ में आ रहा? This being the engine of the train. Yes, this is the engine of the train. The train's last part should be here. Crossing mein you will include what? Your distance, physical different distance that it has to travel. At the same time, the length of its own. Why? Because it has to cover this distance also now, right? Technically it has to cover what? From here, this 200 and then this 100, correct? So overall becomes 300 meters. I hope you are understanding. Yeah. So reaching क्या होता है? Reaching means engine aligned. Yes. Crossing means what? What does crossing mean? Last coach. Last coach aligned. I hope you are understanding this. Yes. सिद्धार्थ, उमा, अगर कुछ नहीं दिख रहा है या बफर हो रहा है, एक बार रीलोड करके देख लो, रिफ्रेश करके देख लो, बिकॉज इट्स ऑल स्मूथ फ्रॉम माई साइड. Yeah, so these 2 points are done, talking about a point. Yeah, now let's talk about a scenario where we have another train. Yes, if a question is asking meeting another train, let's say there are 2 trains moving in opposite directions over 100 meters in between. Yes, each of these trains is also 100 meters long. Quickly tell me, if both these trains have to meet each other, meet each other, how much distance should they travel? Quickly tell me.
they're going in this direction, opposite direction, towards each other. Jaldi batao guys, how much should be the distance that they should cover to meet? Superb. 100, very good. To meet means what? Again, both engines being aligned. Yes. On the other hand, so here what would be? The first train should be somewhere here. Second train should be somewhere here, right? This should be the condition. This is when they meet, when the engines are aligned. Yes, so the distance traveled by them should be 100 meters. However, if we have a scenario where we have both the trains crossing each other. Yes, crossing means what? Crossing means last coaches aligned. I hope you guys understand this. है ना? Train 1, train 2, 100 meters in between. So what should happen? If this is the last coach of both the trains, then if I want to say that both trains have crossed each other, it basically means this should be it. Yes. These are the last coaches. These are the engines. These are the last coaches. So what should they do? They should first cover 100 meters. Yes, they should first cover 100 meters. After that they should cover this train's length 100 meters, then this train's length 100 meters. तो इस केस में क्रॉस में क्या हो जाएगा? The distance would be 100 of the platform in between, 100 of each of the trains, 300. ठीक है? So here in trains, language is extremely important, guys. Language is extremely important, otherwise you will find yourselves in traps that you otherwise will not be found. ठीक है? Got it? हाँ गौरी, वही मैं बोल रहा हूँ ना, overall. What I'm talking about, गौरी, is overall distance. एक ट्रेन का नहीं बोल रहा हूँ मैं, not just one train. अपन जब relative speed लेके आते हैं यहाँ पे, when we bring in relative speed, तब we don't talk about individual distance ना, we talk about overall distance. दोनों ने मिलके क्या contribution किया है ना? I hope that's clear. Hi Aritra, thank you so much, man. Thank you so much. Wow, that is extremely sweet. Thank you so much, Aritra. Chalo, let's take an example and talk about it. So here's your first example. Theta question hai, try karo quickly. Okay, Sumit, Aditya, all say 150. How about others? 150 meters. Vedant, Rohit, Ritik, Milan and Deepankar also say 150. Superb. How about everyone else? बाकी लोग भी कर लो जल्दी से. Superb, Nalan, Ivanshi. Beautiful guys, very good. So look at this, a train crosses a signal in 9 seconds. Yes, so ऐसे situations में भी it's better that you have a visual aid. Okay, so what is it? There is a train here. Unless and until they've given anything with respect to the distance between the engine and the point, you will consider that the engine and the point are aligned. समझ में आ रहा है? Engine और point जो है aligned है, तो क्या बोल रहे हैं?
there is a signal here. Yes, there is a signal here. Okay, यहाँ पे एक सिग्नल है, बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है. there is a signal here. Yes, they're talking about the train crossing the signal in how many seconds? 9 seconds. Yes, so if a train has to cross a signal, basically what should be its future position? This should be the last engine, last coach, and this should be our engine. Correct? ये होना चाहिए उसका न्यू पोजिशन, है ना? ये होना चाहिए इस ट्रेन का न्यू पोजिशन. दैट बेसिकली मीन्स व्हाट? its own length is what it has covered, है ना? its own length is what it has covered. The distance traveled by this train is what? its own length. Time taken to do so is what? 9 seconds. Speed कितना है? 60 kilometers per hour, which is 60 into 5 by 18 meters per second. Correct? Yes, इसको ऐसे ही रहने दो, meters per second. So quickly find out what is distance. Distance is speed into time, है ना? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. फटाफट से डिस्टेंस निकाल लो. डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द ट्रेन विच इज स्पीड विच इज 60 इंटू 5 बाई 18 इंटू टाइम 9 सेकेंड्स. यस, तो अब क्या हो जाएगा? पूरा मीटर्स में आ जाएगा अपना, है ना? दिस इज ट्वाइस, दिस इज वंस, दिस इज 30 टाइम्स. सो आवर लेंथ इज 150 meters. So 150 meters becomes right. Got it? So it's very important that you understand this. ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करो. हाय अर्पण. यार ब्रो मैं भूल गया ब्रो, मैं मैम से पूछना भूल गया. मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं पूछ के आपको बताता हूँ. टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करो, मैं पूछ के आपको वहीं पे बता देता हूँ. आराम से सोच के आंसर करना गाइस. टेलीग्राम का, टेलीग्राम में मैंने कौन सा डाल के रखा है डीपी? मेरे को याद भी नहीं आ रहा है. अच्छा, पुराना वाला क्या? पुराना वाला. पुराना वाला बोल रहे हो शायद आप. आदित्य सुमित से बी 50 किलोमीटर एन आवर. नहीं दीपांकर, आ जाओ आ जाओ. सन ग्लासेस वाला, हाँ हाँ वही वही. वो एक एंगल से ही शक्ल डिसेंट आ रही थी और पेट भी इतना नहीं दिख रहा था उसमें. नॉर्मली इधर तक होता है, नाक इधर तक आता है, पेट उधर तक जाता है. वेदांत एंड सुची ऑल्सो से 50. ठीक है, अदर्स. चलो सिनेरियो समझते हैं. क्या है? ट्रेन है. ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन गिवन टू अस? 1/8 ऑफ अ किलोमीटर. क्योंकि सब कुछ किलोमीटर्स पर सेकेंड पे है. छोड़ो, ठीक है, मीटर्स में लिख लेते हैं. पहले मीटर्स में कर लेते हैं पूरा, फिर कन्वर्ट कर लेंगे. 1/8 ऑफ अ किलोमीटर इज हाउ मच? 1000 meters is a kilometer, है ना? So this will give us 125 meters. Yes, they're saying what? There is a cyclist.
यहाँ पे इसी डायरेक्शन में एक भैया है जो साइकिल चला रहा है. ओके, आई नो दिस डजंट लुक लाइक अ साइकिल बट बेयर विथ मी. ओके, साइकिल चला रहा है. ठीक है, साइकिल का स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर्स पर आवर. सेम डायरेक्शन जा रहे हैं दोनों. 5 किलोमीटर्स पर आवर विच इज नथिंग बट 25/18 meters per second, है ना? 5/18, so 25/18 meters per second. The speed of the train is something that we don't know. Let's keep it S. They're saying that this train can cross the cyclist who's also moving in 10 seconds. यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये भी मोशन में है. This is also in motion. This is also in motion. Both moving in the same direction. जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और दोनों का स्पीड एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो व्हाट हैपेंस? रिलेटिव स्पीड हैपेंस. व्हाट इज रिलेटिव स्पीड व्हेन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? डिफरेंस, है ना? तो स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ द साइकिल. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, दिस बिकम्स द रिलेटिव स्पीड. They're saying what time taken to cover this distance is 10 seconds. क्या distance? Distance is nothing but length of the train which is 125 meters. समझ रहे? Yes. So can I equate this now? इसको मैं equate कर सकता हूँ क्या? Distance by time is nothing but speed, है ना? तो 125/10 is nothing but S minus 25/18. Would you agree? Yes. So take this to the other side. You will have 12.5 plus 25/18. This is nothing but your speed, but this is in terms of meters per second, है ना? We wanted in terms of kilometers per hour, but this is in terms of meters per second. Yes. तो ये कितना हो जाता है? This comes up to 25/18 plus 12.5 comes up to 13.888. ठीक है, छोड़ो, ऐसे ही ऐड कर लो फिर. Times 18. This is 225. 225 plus 25 is 250. 250/18 meters per second. This is your speed. अपने को क्या चाहिए? किलोमीटर्स पर आवर में चाहिए. So speed becomes 250/18 into 18/5 kilometers per hour. ये cancelled. This becomes 50. What is our answer? Speed is 50 kilometers per hour. Got it? Yes. Either this way or you can do it using reverse engineering. Correct. Reverse engineering will also work, Sochi. Very good. Gauri, 125 कैसे आया? 125 is the length of the train. 1/8 of a kilometer. 1000 meters by 8. This is 125 meters. ठीक है गौरी? रिवर्स इंजीनियरिंग से भी आ जाएगा. 5 किलोमीटर्स पर आवर है. द अदर मस्ट बी 45. क्यों? क्योंकि सी 1/8 ऑफ अ किलोमीटर इज कवर्ड इन 10 सेकेंड्स. इसको आप आवर्स में कन्वर्ट करो. कन्वर्ट दिस इन आवर्स. यस, कन्वर्ट दिस इज. अच्छा, 10 सेकेंड्स में अगर 125 मीटर्स कवर हो रहा है, यहां पे देखो 10 सेकेंड्स में अगर 1/8 किलोमीटर कवर हो रहा है, तो 3600 सेकेंड्स में कितना कवर होगा? 45 किलोमीटर्स. बराबर. 3600 सेकेंड्स इज 1 आवर. तो अपना रिलेटिव स्पीड शुड बी 45 किलोमीटर्स पर आवर. रिलेटिव स्पीड मस्ट बी 45 किलोमीटर्स पर आवर. वो कब होगा? जब 5 से सब्ट्रैक्ट हो जाता है 50. सो 50 becomes your right answer. Reverse engineering also works here. Cool.
हैव यू अंडरस्टूड दिस गाइस? सबको आ गया क्या समझ में? अगर आ गया समझ में तो एक बार यस भेज दो एंड हिट लाइक ऑन दिस वीडियो, और फिर अपन आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। Milan, how many questions should you attempt? For what score? आपका एम स्कोर क्या है, आपका एक्यूरेसी क्या है, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे, ऑल दैट विल डिसाइड नो। आप ऐसे ही नहीं पूछ सकते कि कितने करने चाहिए, है ना? चलो जल्दी से ये वाला ट्राई करो। योगिता, आदित्य, सुमीत से ए, ठीक है। हाउ आर अदर्स? आदित्य नक्शे से ए 50 मीटर्स, बाकी लोग? एवरीबॉडी से ए, वेरी गुड। मिलन, तनिष्क, रोहित। ऑलराइट वेदांत, गौरी। चलो लेट्स अंडरस्टैंड द सिनेरियो। टू ट्रेन्स इक्वल लेंथ, yes they both start after 36 seconds। इनका कैसे हो जाता है? फर्स्ट ट्रेन passes the second one, है ना? फर्स्ट ट्रेन passes the second one, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ, दोनों का लेंथ कवर किया, है ना? तो 2 times the length was covered by technically both the trains, yes, since they are moving in the same direction, A to B same direction, इनका क्या हो जाता है? डिफरेंस। 46 minus 36 10 किलोमीटर्स पर आवर। समझ में आ रहा है? 46 minus 36, क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन। यस, सो 10 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड पे 36 सेकेंड्स में कवर हो गया। 36 सेकेंड्स इन टर्म्स ऑफ आवर्स कितना हो जाएगा? 36 बाई 3600, यस। या अगर इसको मीटर्स पर सेकेंड में करना है तो कर लो, आपकी इच्छा, बट दिस वुड बी इट। 1/100th of an hour, are you getting it? 1/100th of an hour, है ना? तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग दैट 2 times L is equal to 1/10th of a kilometer, और 2 times L is equal to 100 meters। 1/10th of a kilometer is 100 meter, है ना? Speed into time will be distance, that's it। So the length of each train becomes what? 50 meters। It's very important that you don't miss out this fact। ठीक है? Very important for you not to miss out this fact, yes? Definitely Vedant।
is the first train at the end of the second at the start to cover 2 times the length. Rose, I'm not understanding what you are asking. See, normally first starting में at the start, this is the scenario. Both the trains equal length at the same position. Same position. Yes, no, थोड़ा सा इसमें लग रहा है ऐसा difference. Same position. Okay. These are the engines. But after 36 seconds, their position becomes like this. One train is here. The other train must be here. Getting it? ये इसका engine है, ये इसका engine है. दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसका स्पीड है 36 किलोमीटर्स पर आवर, इसका स्पीड है 46 किलोमीटर्स पर आवर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ. तो इसका जो इंजन है, दिस इंजन मस्ट बी अलाइन टू दिस लास्ट कोच. यस, चलो नेक्स्ट ट्राई करो जल्दी से. क्विकली ट्राई दिस. No, Rose, think it like this. This is one train. मेरे पास कुछ ट्रेन जैसा कुछ है भी नहीं, कैसे बताऊं. This is one train, this is another train. ठीक है, try to bear with me. ये एक ट्रेन है, ये दूसरा ट्रेन है. Yes, ये वॉलेट है, वैसे खाली है, बट ठीक है. Yes, both are like this now. Both are like this. If one train has to cover the other, पहले देखो इसका डिस्टेंस कवर करना पड़ता है वॉलेट का, फिर उसके बाद बॉटल का. बोथ द लेंस गेट कवर्ड. समझ में आ रहा है? कभी भी, इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, वेदर इज द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन, ईदर विच वेज अगर क्रॉस वर्ड आ जाए, क्रॉस, तो दोनों का लेंथ क्रॉस होगा. ठीक है, बिकॉज बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग. दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Everybody says option C, 245. How about others? बाकी लोग? Anyone else? Superb. What is the length of the bridge which a train 130 meters long? The train is 130 meters long. Okay. Traveling at 45 kilometers per hour, which is basically 45 into 5 by 18 meters per second. Yes. Is going to be what? 2 times 5 times 25 by 2 meters per second के speed पे it is traveling and it crosses what? A bridge. यहाँ पे एक bridge आ रहा है. There is a bridge here that it covers. Yes, and it crosses. Crosses मतलब क्या? ट्रेन का नया पोजीशन कहाँ पे होगा? Here. Yes, crosses मतलब क्या? Ends must meet. Yes. So basically this length of the bridge L and this 130 meters, both it is covering in 30 seconds. Yeah. So what is it? Distance is speed into time. Speed is 25 by 2 meters per second. Time is 30 seconds. This gives us what? 375 meters. Yes. Out of 375 meters, ये 375 meters का टोटल डिस्टेंस, वैसे 130 meters तो क्या हो गया? अपना ट्रेन ही हो गया.
Therefore the remaining 245 meters will be the bridge. Clear? Everybody, people who didn't or couldn't answer for this, ये clear हो गया ना? 245 meters. चलेंगे next. Shall we move to the next example? Here it is. Quickly try. Read the question carefully and then answer, guys. Okay. I'll add up a little more time. Akshay says D, none of the above. Okay. How about others? Akshay बोल रहे D, none of the above. Vedant says 3:2, option B. Adit says B. Suchi isn't getting. Okay, don't worry. Others? Others? Milan says B. Sumit and Aditya say D. Tanishq says E. Okay, sorry, A. Rohit says 5:4 is the answer. Others saying none of the above. क्या आंसर आ रहा है? बाकी लोग जो none of the above बोल रहे हैं उनको क्या आंसर आ रहा है? फटाफट से बताओ जरा guys. People saying none of the above, आपको क्या आंसर आ रहा है? Ivanshi also says 5:4. Okay. चलो let's take the scenario. Let's split them. ठीक है, case 1 case 2 लेते हैं. Yes. First train लेंगे. Train 1. Train 1 का कुछ तो length है, we don't know. Right? We have no clue about the length of the train. They're saying there is a man. Yes, they cross a man. There is a man. This train crosses this man. Yes, man is stationary, man is not moving. Train cross कर देता है कितने सेकेंड में? 27 seconds में. Yes, if I consider the speed of this train to be x kilometers per hour, इसका स्पीड मैं कंसिडर कर रहा हूं x kilometers per hour. तो इसका लेंथ क्या हो गया? लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ becomes what? Distance, sorry, speed into time. Speed is x, time is 27, है ना? So 27x meters or whatever, kilometers, जो भी, meters per second ले लो. चलो ये इसको meters per second कर लेते हैं. No confusion at all. Yeah. Agreed. Length of first train is what?
27x meters per meters, right? सेकेंड ट्रेन का सिनेरियो लेते हैं, सेम केस, ट्रेन, मैन, दिस डायरेक्शन, y मीटर्स पर सेकेंड लेंगे, इसका स्पीड कितने सेकेंड्स में, 17 सेकेंड्स में क्रॉस कर देता है. सो व्हाट वुड बी इट्स लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन वुड बी speed into time, which is x into 17, okay, y into 17 gives us 17y meters. ये उसका लेंथ हो गया. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं 23 सेकेंड्स में. तो ये रहा आपका सेकेंड ट्रेन, दिस इज योर सेकेंड ट्रेन, दिस इज योर फर्स्ट ट्रेन, both of them cross each other, both of them cross each other in how many seconds, 23 seconds. मतलब इसका 27x meters और इसका 17y meters, दोनों कितने देर में खत्म हो रहा, कवर हो रहा, 23 seconds. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज हाउ मच, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज दोनों का लेंथ 27x plus 17y. Time taken to do so is how much, 23 seconds. Yes, in what direction are they going? Opposite direction. तो relative speed क्या हो गया, sum of both their speeds. एक का x किलोमीटर्स पर मीटर्स पर सेकेंड है, दूसरे का y मीटर्स पर सेकेंड है. समझ में आ रहा है? Yes, now equate them. What is distance, speed into time, है ना? So 27x plus 17y is speed, which is x plus y into time, 23 into x plus y. समझ में आ रहा है ये? So 27x plus 17y is 23x plus 23y. Take this here, you will have 4 times x is equal to 6 times y, or x by y is 3 by 2. Which is option B, 3 by 2. Option B is the correct answer. तो जिन्होंने भी 3 by 2 बोला है, ऋतिक, आदित्य, अक्षय 2:3 नहीं है, 2:3 नहीं, 3:2 है. ठीक है, यस. या इन दिस केस यू कैन ऑल्सो यूज एलिगेशन. इसमें आप एलिगेशन से भी कर सकते हो. व्हाट इज इट, इंडिविजुअली इसका 27 सेकेंड्स लग रहा है, इंडिविजुअली इसका 17 सेकेंड्स लग रहा है, टुगेदर उनका 23 सेकेंड्स लग रहा है. सो दिस इज 4 पार्ट्स, दिस इज 6 पार्ट्स, बट सिंस दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, नॉट टाइम, टाइम नहीं स्पीड, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. गेटिंग इट? सो दिस बिकम्स 3:2. कर सकते हो, नो हार्म एलिगेटिंग हियर. यस, चलो, ब्यूटिफुल गाइस. अगला क्वेश्चन जल्दी से करो, ट्राई, क्विकली ट्राई दिस. It's understood. See, Rohit, look, 3 अगर ट्रेन 1 का पहले दिया है, ट्रेन 2 का बाद में दिया और रेशियो पूछा है, तो इट्स अंडरस्टूड दैट इट हैज टू बी 1 फर्स्ट ट्रेन टू सेकेंड ट्रेन, है ना? इफ नथिंग इन स्पेसिफिक इज गिवन, रेशियो के बारे में कुछ अगर स्पेसिफिक नहीं दिया है, तो इट बेसिकली मीन्स व्हाट, फर्स्ट ट्रेन इज टू सेकेंड ट्रेन, है ना? नहीं अक्षय, लुक,
what matters, what also matters there is that कि distance constant नहीं है ना. पहली बार में सिर्फ फर्स्ट ट्रेन का लेंथ होता है, सेकंड वाले में सिर्फ सेकंड ट्रेन का लेंथ होता है, थर्ड वाले में दोनों का लेंथ होता है. आई होप यू आर टेकिंग दैट ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन. इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्क्स व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट. पिछले वाले में कांस्टेंट नहीं था. सुमित, आदित्य, वेदांत, अर्पण, साहिल, नलिन, योगिता, इवांशी, अक्षय सब बोल रहे हैं बी. 240 मीटर्स है प्लेटफॉर्म का लेंथ. अदर्स सुपर. मिलन, और कोई कर रहा है क्या सॉल्व? सुपर साहिल, वेरी गुड रोहित. दो अलग अलग सिनेरियो ले लो. फर्स्ट केस में क्या है? मैन. ठीक है, मैन मतलब क्या है? पॉइंट हो गया. क्रॉसेस अ पॉइंट मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नथिंग बट इट्स ओन लेंथ. यस. स्पीड दे दिया है ट्रेन का 54 किलोमीटर्स पर आवर विच इज बेसिकली 15 मीटर्स पर सेकेंड. यस. और टाइम क्या दिया है मैन के केस में? 20 seconds. Yes, so what is distance? Distance is speed into time which is 15 into 20, 300 meters. ये हो गया मैन के केस में. आगे अब क्या बोला है? स्टेशन. When the station comes into picture, platform comes into picture, the distance covered will be what? Length of the train plus length of the platform, correct? In this case it's what? 300 plus p. प्लेटफॉर्म का लेंथ ही पूछा है. yes. speed is same 15 meters per second. time taken to cover that is 36 seconds. so the actual distance is speed into time which is 540. yes. 540 मीटर्स में से 300 मीटर्स तो हो गया ट्रेन का, है ना? तो बाकी क्या बचता? 240 मीटर्स. दैट बिकम्स द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. फुल ऑप्शन बी. मिलन, इट डजंट मैटर मैन कहां पर है. इट डजंट मैटर कि मैन कहां पर है. यस, मैन कुड बी एनीवेयर. एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, मिडिल ऑफ द प्लेटफॉर्म, बिगिनिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म. मैन प्लेटफॉर्म पे ही नहीं, पटरी पे है. मैन गुलाम गुलाम खेल रहा है. कुछ भी कर सकता है मैन. यस, समझ रहे हो? द ओनली रीजन वाई दे गिव अ क्वेश्चन लाइक दिस इज टू, इंस्टेड ऑफ टेलिंग अस के दो डिफरेंट केसेस है, डिफरेंट सिनेरियोज है, They're trying to combine it into one, और it basically means कि मैन कहीं पर भी हो सकता है. चलो ये वाला ट्राई करो. हाँ, मैन का नेग्लिजिबल होता है डिस्टेंस, क्योंकि मैन का पाँव कंपेयर टू द लेंथ ऑफ आवर फीट. पाँव अभी बता नहीं सकता मैं, समझ लो यही पाँव है. दिस लेंथ इज ऑफ नो कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो कि 300 मीटर है. वो 300 मीटर है, ये 1 मीटर भी नहीं है ना? नेग्लिजिबल है. अरे हाँ, ये वाला हो गया ना. ये वाला हो गया. हाँ हाँ, 50 मीटर्स. यस यस, ये हो चुका है. या सेम डायरेक्शन, relative speed 10 kilometers per hour, which is basically
50/18 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम दे दिया है 36 सेकेंड्स। डिस्टेंस पूछा है विच इज 50/18 इंटू 36 विच इज 100 मीटर्स इज दोनों ट्रेन का मिला के, तो ईच ट्रेन विल बी 50 मीटर्स। ये अभी किया था अपन ने। चलो ठीक है, नो हार्म, ट्राई टू डू दिस। ये वाला करोगे जल्दी से। अच्छा, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक ऑन दिस वीडियो, ठीक है? अगर हो गया तो लाइक कर देना वीडियो पे। नहीं सिद्धार्थ, सिद्धार्थ पूरा डेटा कहीं और ख़त्म करके आए हो क्या? बार बार बफर हो रहा, मेरी तरफ से नहीं हो रहा बफर। सुची बोल रहे हैं आंसर है सी। अदर्स? I'll add some more time for this question. थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं इसके लिए। जल्दी करो ट्राई। डी सुमित वेदांत सुमित और वेदांत बोल रहे D81। अदर्स? बाकी लोग कर रहे हो क्या अभी तक ट्राई? ऋतिक, मिलन, आदित्य से डी। ओके, हाउ अबाउट अदर्स? बाकी लोग? सबका 81 आ रहा है, सुपर ब्यूटीफुल। राइट गाइस, 81 इज द राइट आंसर। जिनने 78 बोला था सूची एक बार चेक कर लो। 78 is not the right answer. See, look what is happening here. A train overtakes two persons walking along a railway track. Okay, दो अलग अलग पर्सन ले लो। पर्सन 1 डिफरेंट सिनेरियो, पर्सन 2 डिफरेंट सिनेरियो। यस, जब ट्रेन और आदमी ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, आदमी भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रहा है। ट्रेन का स्पीड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज गिवन एज व्हाट? Okay, that is what we have to find out. Speed of the train is what we have to find out. Yes. And train overtakes two persons. First one walks at a speed of 4.5 kilometers per hour, which is 4.5 into 5/18 meters per second, है ना?
यस ये कितना हो जाएगा 4.5, this is 5 times, this is 20 times 4 5/4 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है आदमी का। सेकेंड केस में क्या है, सेम ट्रेन, यस सेम स्पीड, man travels at what speed, 5.4 kilometers per hour. Yes, that in terms of meters per second is how much, 5.4 into 5 by 18, this is thrice, this is 10 times, which is 15 by 10, 3/2 meters per second. Yes, दोनों का अपने को स्पीड मिल गया है, both the speeds we've gotten. Now what are they saying, first train needs 8.4 seconds to cross this man. मतलब क्या, इसका क्या basically length, right, its own length it is covering, है ना, both are moving in the same direction, तो relative speed क्या हो जाएगा, speed of the train minus speed of the man. Time taken is how much, 8.4 seconds. Yes, so the length of the train is basically what, speed into time, s minus 5/4 into 8.4. Yes, same way here on the other side also what will happen, same logic. Sorry guys, relative speed क्या होगा, s minus 3/2 meters per second. Time taken is what, 8.5 seconds. Distance is nothing but its own length. Length दोनों केस में सेम रहेगा, so distance is nothing but speed into time. यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो, go for reverse engineering, because both cases the speeds the lengths will be equal. ये दोनों equal होने चाहिए. s minus 5/4 यहाँ पे कर रहा हूँ, देख लो, I am equating them here. s minus 5/4 times 8/8.4 should be the same as s minus 3/2 for 8.5. यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो या रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो, वॉट एवर दैट वर्क्स फॉर यू. यस, इफ यू टेक 81 किलोमीटर्स पर आवर विच इज नथिंग बट 45/2 मीटर्स पर सेकेंड, है ना, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर, दिस विल बी इक्वेटेड. सो s इज इक्वल टू 45/2 meters per second, which is nothing but 81 kilometers per hour. Yes, done. Diphenhydramine क्या होता है वेदांत, कौन से नशे करवा रहे हो भाई? ठीक है, प्राइम नंबर का ये फॉर्मूला गलत है, पी स्क्वायर शुड बी डिविजिबल बाय 24 करके कुछ, पी स्क्वायर शुड बी डिविजिबल बाय 24, नॉट ऑलवेज यार, क्या बोल रहे हो, डेफिनेटली गलत है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन. Milan, p square should be divisible by 24. Are you sure? P square 5 हो गया, 5 square is 25. 25 by 24 is not divisible. हाँ, p square minus 1, p square minus 1, that's there.
p स्क्वायर माइनस 1 होगा। नहीं साहिल, टाइम हो गया है, अगले एजुकेटर आ चुके होंगे, है ना? तो इसको करेंगे ना, डोंट वरी, कल करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। चलो ओके गाइस, दीज आर द अपकमिंग बैचेस, प्लीज कंसिडर ज्वाइनिंग देम। ये मेरे बैचेस हैं, ज्वाइन हो जाओ यहाँ पे। ये 10th Feb से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, दिस विल गो ऑन फ्रॉम 6:30 PM till 8 PM। यहाँ पे हम टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस करेंगे। There'll be 10 1.5 hour sessions, मतलब 15 hours इसमें होगा। एंड ऑन 13th Feb सैटरडे को, सैटरडे संडे बैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा, नंबर सिस्टम से। तो मिलन, आपको जो डाउट था नंबर सिस्टम पे, यहाँ पे आप आके वो क्लैरिफाई कर सकते हो। यस, दिस विल गो ऑन फ्रॉम 2:30 PM till 4:30 PM। ये वीकेंड बैच है, ये वीकडे बैच है, ये मंडे टू फ्राइडे चलेगा। यस, to become a part of this, all you have to do is either take Plus or take Iconic. Only difference between them is you have a personal coach in Iconic. There'll be a standalone preparation for other management entrance test, expert guidelines at every step of the way, and personalized test results and analysis given to you. You can pick up any one of these, take the 12-month and the 24-month one, use my referral code Surana Live, get your discount of 10%, less than 800 rupees a month to crack CAT with no cost EMI options available. The same thing for Iconic, 12 months है, 24 months है, use my referral code Surana Live, get your discount of 10%. For about 3,000 rupees a month, you will now be able to crack CAT, other management entrance test, and also there'd be a guidance towards GDPI, WAT, GE, whatever, right? Okay, don't forget to use my referral code Surana Life. I'll see you all tomorrow, same place, same time. Until then, keep yourself safe and happy. Bye bye guys, take care.